Students, today we are going to discuss chapter number 2 of 9th ICSE chemistry, chemical changes and reactions. So basically this chapter is about types of chemical changes and reactions. So first of all, we start with what is chemical change. So chemical change is a permanent change in which the chemical composition of a substance is changed and one or more new substances with different chemical composition and different properties are formed. So just understand the definition. We have 2 to 3 parts of the definition that you can learn part wise. So chemical change is a permanent change. Secondly, in which chemical composition of a substance is changed, means after the reaction its composition changes, either increases or decreases. One or more new substances are formed and they have different chemical composition and different properties. दिस चेंज इज़ नॉट ईजिली रिवर्सिबल. हम इसे चेंज नहीं कर सकते. एक बार केमिकल चेंज हो गई, इट इज़ डन परमानेंटली. अ केमिकल चेंज ऑलवेज इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन. जब भी कोई केमिकल चेंज होगी उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन ज़रूर होगी. A chemical reaction is the process of breaking the chemical bonds of reacting substances and making the new bonds to form new substances. So जब भी कोई chemical reaction होती है इसमें हमेशा जो रिएक्ट करते हैं दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स और जो नए कंपाउंड्स बनते हैं दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स. सो अ केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स दैट होल्ड्स द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल टुगेदर एज इन अ कंपाउंड. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी उसमें पुराने बॉन्ड्स जो हैं वो क्या करेंगे, टूटेंगे और नए बॉन्ड्स जो हैं वो जनरेट होंगे. सो केमिकल बॉन्ड क्या है? दिस इज़ द फोर्स जो एटम्स को कंबाइन करके रखता है, होल्ड करके रखता है टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड इन अ कंपाउंड. कोई भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन कब होती है? व्हेन पार्टिकल्स कोलाइड, व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर्स. Collision occurs when reactants are in close contact or by supply of energy. Either energy is supplied या फिर जब atoms पास में आते हैं. Reactants when come close they collide with one another. So one or more of the following conditions are necessary. किसी भी chemical reaction को होने के लिए हमें कुछ conditions चाहिए. So what those are? First is mixing or close contact. In some cases a chemical reaction occurs when two substances are mixed in their solid states. So जब दो substances को mix किया जाता है तो chemical reaction होती है. For example, when iodine and phosphorus react explosively, जब दोनों को क्या किया जाता है? When they are brought in close contact, when we bring them near to each other, they react explosively. Lead nitrate and potassium iodide react to make lead iodide. So lead nitrate और potassium iodide जो कि दोनों ही solid state में हैं, when they are brought in contact with each other, they react to form potassium nitrate and lead iodide, and which is further in a solid state. So जब देखिए lead nitrate and potassium iodide, they have different properties. जब ये नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? इट विल ऑल्सो बी डिफरेंट. सो दिस इज व्हाट अ केमिकल रिएक्शन is. Second is solution. In some cases, a chemical reaction occurs when substances are mixed in either molten or aqueous state. Molten, you know, fused state, and aqueous, जब हम किसी भी solid को पानी में mix करते हैं, it becomes an aqueous solution. So जब दो solutions को mix किया जाता है, it also brings about a chemical reaction. For example, oxalic acid crystals and sodium carbonate react in water solution only. ये सिर्फ कब react करते हैं आपस में? When they are in a solution form. They do not react when they are in a solid form. Sodium chloride and silver nitrate also react in a solution state to form the precipitates of silver chloride and sodium nitrate. This is actually example of precipitation reaction also. Sodium chloride low and add it into water, make its aqueous solution. Silver nitrate लीजिए and then add it into water, make its aqueous solution. When we mix both of them, they form white precipitates of silver chloride and sodium nitrate in a aqueous form. Third condition we have heat. So कुछ chemical reactions को जब आपने
occurrence में लाना है, for that you requires heat. For example, copper carbonate जो है, it only decomposes or breaks when it is heated to form copper oxide and carbon dioxide. Similarly, lead nitrate जो है, it also breaks into lead nitrate, nitrogen dioxide and oxygen when it is heat. Next condition we have light. So कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें शुरू करने के लिए वी रिक्वायर लाइट, और इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल और फोटोलिसिस रिएक्शंस. Molecules of reactants absorb light energy to get activated and then react rapidly. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स जो क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दे एब्जॉर्ब द carbon dioxide and water, and what form, they form a glucose. So carbon dioxide in the presence of light reacts with water to form glucose, carbon dioxide and water again. Similarly, hydrogen and chlorine react in the presence of sunlight to produce hydrogen chloride. इसी तरह से when chlorine water is exposed to sunlight, bubbles of a gas are seen, and which gas it is, oxygen. This is very important reaction, you have to keep in mind. Sometime क्या पूछा जाता है, that when chlorine water is exposed to sunlight, name the gas evolved. So what is the answer, it is oxygen. Next we have electricity. This is another condition. So certain chemical reactions like decomposition of certain compounds occur only when electricity is passed through them. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ acidulated water. What is acidulated water? Water which contains 2 to 3 drops of any concentrated acid. So वाटर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसी तरह से सोडियम क्लोराइड में से जब हम करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इट फॉर्म्स सोडियम एंड क्लोरीन. नेक्स्ट कंडीशन वी हैव प्रेशर. कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं विच अकर्स एट हाई प्रेशर. फॉर एग्जांपल, मर्क्यूरिक क्लोराइड को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रब करते हैं किसी मोर्टार के अंदर, इट फॉर्म्स मर्क्यूरिक आयोडाइड. इसी तरह से वी हैव हेबर्स प्रोसेस. ये प्रोसेस, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हेबर्स प्रोसेस, जिसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, 1 volume of nitrogen and 3 volumes of hydrogen, they combine at a pressure above 200 atmosphere, and it is a reversible reaction to form ammonia. This is called as a Haber's process. Then next we have catalyst. So what is catalyst? कुछ reactions ऐसी हैं जिन्हें एक्सेलरेट या डिसेलरेट करने के लिए, इनकी रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने के लिए उनमें एक कंपाउंड डाला जाता है. That compound is called as a catalyst. So certain chemical reactions proceed by absorption of sound energy also. For example, acetylene C2H2. Keep the formula in mind. When sound is passed through it, it absorbs the sound and breaks into carbon and hydrogen. So students, it's all about today, and in our next video we will study about the types of catalysts and different characteristics of the chemical reactions. And as soon as this part is over, we will go through the exercise 2A. Thank you.